one of the most beautiful cities in the world. We also call that city of lights, city of love. And when we say word romantic, first thing comes in our mind, then we say bonjour Paris. Bonjour and bienvenue to my channel Capital Walk. कैपिटल वॉक की सीरीज़ में आज हम हैं पेरिस, जो फ्रांस का कैपिटल है. और इस वीडियो में आई विल शो a day in Paris, how you can spend day in Paris. I'll try to cover maximum tourist spots in one day. Let's go. यार सबसे पहले तो आपने ये डे पास बनवा लेना है. Like it's really important. ये है पेरिस का मैप. जो कि लंदन में रहते हैं उनके लिए तो बहुत इजी है, पर इस वक्त हम यहाँ रह रहे हैं ईस्ट साइड पे पेरिस की, और आईफल टावर हमने जाना यहाँ पर है. So it could be best to take this sea line. This is a stop for the Eiffel Tower. Best to come here through Cathedral. तो सबसे पहले अपनी जर्नी स्टार्ट करें आईफल टावर से ही. नो डाउट एक आइकॉनिक है. Okay, so this is the best spot to take picture. Mostly we take picture from the other side of the Eiffel Tower, but असल view यहाँ पर है. एक तो जहाँ जगह मिलते नहीं वहाँ पे सारे तारे लगा के चले जाते हैं. ये शादी का एक शूट हो रहा है, वेडिंग शूट. What a romantic shoot, isn't it? A beautiful bride. We are heading towards our next destination and it's called Arc de Triomphe. That's what we call, I don't know. Did I pronounce exactly or not? If you walk toward east side of Arc de Triomphe, so यहाँ पे एक जिस तरह लंदन में ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट है, सब luxury brands you'll find here. Let's explore this out. So दोस्तों, the next point is a very famous museum de l'eau. This museum is one of the biggest museum in the world, and that's in the Paris. और मोना लिसा की पेंटिंग भी इसी में है, but unfortunately the line बहुत ज़्यादा बड़ी है और गर्मी on its peak, so maybe we can't go in there, but still we're enjoying it.
Okay, तो उसके बाद मैं नहीं वीडियो बना and after that, if you know, Paris is known for romantic. So यहाँ पे एक ब्रिज बहुत फेमस था, लव लॉक ब्रिज था क्या है, दिस इज़ अ लव लॉक ब्रिज, क्योंकि उसका वेट लॉक्स की वजह से बहुत ज़्यादा हो गया था. नाउ दे हैव रिप्लेस इट विद ग्लास. ये है रिवर शॉन, what a beautiful view. So we are in because city of love. So there is a wall in Paris. इस पे हर ज़ुबान में एक I love you लिखा हुआ है. Most probably 600 more than languages इसमें they say I love you. So now let me show you. So this is a wall where I need to find it. What's in English? This is in Hindi. So I found in Urdu as well. Let me show you. मैं तुमसे इसका नाम क्या लिखा हुआ है? सब यहाँ पे क्या यार. C'est écœurant. On est écœuré. Vous êtes beaux. Profitez de la vie. Okay, so अब जिस जगह पे हैं हम, this is one of the most iconic and the most important place, and this is the Catholic church at the highest peak of, and its name is Sarajevo Catholic Church. So just look at that view. Let's visit the gym from inside. अंदर से भी चल के देखते हैं क्या सीन है. इसके बाद स्ट्रेट कम डाउनस्टेयर्स और एक बहुत ही अच्छी और नॉस्टैल्जिक मार्केट यू विल फाइंड इट हियर एंड लेट्स एक्सप्लोर दिस मार्केट. दिस मार्केट इज कॉल्ड ए Montmartre.
very beautiful and nostalgic market. Also, you should visit that. पेरिस के मशहूर वेरी नॉस्टैल्जिक एंड टिपिकल कैफ़ेज़ जो इस एरिया में है, इस कैथोलिक चर्च के पास, यू फील वेरी नॉस्टैल्जिक व्हेन यू पास बाय देयर। बहुत अच्छा लगता है। फ्रांस और उसकी बेकरी croissants। लंदन में और फ्रांस में एक बड़ा जो फ़र्क है ना, यहाँ की स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट तो सेम है, बट यहाँ की बैल्कनीज, लंदन में यू डोंट फाइंड एनी बैल्कनी, बट हियर you find a bench just like that. Okay, so Paris main boulevard एक बहुत ही आइकॉनिक स्मॉलिश रॉक, बहुत ही पुराना एक विंड मिल पहले पेरिस में बहुत ज़्यादा होती थी, अब ये जस्ट एक रह गई है। और यहाँ की नाइट लाइफ में ये बहुत एक अच्छी आइकॉनिक प्लेस है। जस्ट लुक एट दैट।